Hey guys, welcome to Django class, and from today onwards I have decided to speak both in Hindi and English. So my next lecture and upcoming lectures will be there in both Hindi and English. So last class we had seen that we had established one to many relationship, and इस class में हम लोग देखेंगे many to many relationship कैसे establish करते हैं. For that what I am going to do, I am going to introduce you with a class called promotions. So I will introduce you with promotions, okay, and I link it with the products. अभी देखते हैं प्रमोशंस एंड प्रोडक्ट्स में रिलेशन कैसे होता है. सो इफ़ यू सी ए प्रमोशन कैन हैव मेनी प्रोडक्ट्स, ओके, एंड अ प्रोडक्ट कैन हैव मेनी प्रमोशंस, बिकॉज एक प्रोडक्ट में हमारे बहुत सारे प्रमोशंस लग सकते हैं. मेनी डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड. सिमिलरली प्रमोशंस, एक प्रमोशन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं. तो देर आर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द प्रमोशंस. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट a class called promotion. Okay, I'll write, and it will be model dot model. Okay, और इस प्रमोशन का एक डिस्क्रिप्शन होगा, and it will be models dot, you can say, char field, which will have max length of 255. okay, now this will have some discount also. Okay, models dot, which will have float field, क्योंकि discount it can be 1%, 10%, 0.5%, anything it can happen. Okay, then it can also have start date, end date, that depends on the seller who is selling the product. Okay, so that you can do it. For time being I am just keeping description and discount only. Now if you see, this is a parent class for the product. So if I apply this promotion, if I reference this promotion class in the product class, then I'll have all the promotions which are applied to a product. तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा called promotions. Okay, and I'll write models dot, I'll write many to many relationship, because many to many fields, and then I'll pass the promotions. Okay, the moment I do this, what will happen, Django will automatically create a reverse relationship in the promotion class. ठीक है, वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट सेट करके एक बना देगा वो फील्ड अंडर प्रमोशन क्लासेस. ठीक है, दैट विल रिटर्न ऑल द प्रमोशंस टू विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग अप्लाइड टू. ठीक है, बेसिकली एक प्रोडक्ट में जितने भी उसके डिस्काउंट्स हैं, जितने भी उसमें प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशंस अप्लाई हो सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय द प्रोडक्ट सेट. Let's say products, instead of product set you want to keep the name as products only, then you have to do one thing. You have to pass a related name equals to products. Okay, so when you pass this related name equal to products, then instead of product set it will create a field called product. If you want to keep it as product 23, then it will create a field called product 23. So but for time being मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, आई विल नॉट चेंज इट. ओके, सो लेट इट बी. सो दिस इज हाउ यू रिलेट many to many relationship between the two models, that is promotions and product. Okay, so now we will discuss something called the circular dependency. So circular dependency is nothing but when two classes depends on each other, that means a circular dependency arises. That means, for example, if a collection class is dependent on product class and product class is again dependent on the collection class, then this will be called as the circular dependency. So here पहले हमें हमारे पास already product class जो था वो depend था collection class का. Okay, now collection class के dependent होने से अभी क्या आएगा, we had seen that relationship between the product and the collection, wherein we had assumed that collection will be only one and it will have multiple products. The second feature which I had told you in the previous class was a featured products. That means a collection will also have some relationship with the products. So there could be many collection based on the requirements. So in that case हमें क्या करना पड़ेगा, अभी collection class के लिए भी एक हमें एक define करना पड़ेगा. Let's say we define it as featured product. Okay, featured product. Okay, और इसको मैं दे लूँ models dot, which is a foreign key again, and इसमें मैं पास कर दूँगा product को. Okay, now
and I'll set on delete equals to set null. Okay, on delete equals to null, and here I'll set null equals to true. Alright, now if you see over here, यहाँ पे product के सामने एक आ रहा है कि product is not defined, because हमने जब हमने डिफाइन किया था product को, if you see come over here, product को we had a dependency called collection which is a foreign key, hence this product class was dependent on the collection class, so we defined the collection class above the product class. अभी क्या हुआ है, collection class भी अब डिपेंड हो गया है product class पे, ठीक है। तो जब collection class डिपेंड करेगा product class पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, product class should have been written before that. Okay, so this is what called as the circular dependency, but we cannot write it over there. So what we will do, I had told you that one trick, so you just pass this product to within a quote. So I'll just simply shift this thing, and now the problem is solved. But there is another problem over here. Now if you see over here, because of this collection class, we have defined this collection class over here which is having a foreign key of to the product class. So what will happen, Django will create a reverse relationship in the product class, but the moment Django will create reverse relationship in product class, it will have a name clash, because collection नाम का ऑलरेडी यहाँ पे एक बैठा हुआ है पहले से, जब हमने पहली बार क्रिएट किया था उसमें। तो अभी जब दोबारा जब ये यहाँ पे क्रिएट करेगा तो क्या होगा, कलेक्शन दोनों क्लैश हो जाएंगे। सो वी हैव टू ऑप्शन ओवर हियर, सो इधर वी हैव टू सेट हियर related name equals to blank, either blank, okay, or you can set it as plus over here. So this will tell Django that not to create any reverse relationship in the product class, and in this way circular dependency can be resolved. Alright guys, so quick revision करेंगे हम एक बार। हमने क्या किया कि पहले collection class बना था, उसके बाद product class था, तो product class was dependent on circular collection class। तो हमने क्या किया, रिलेशन इस्टेब्लिश किया, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया था, कलेक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट फॉरेन की विच इज ए डिपेंडेंट ऑन द कलेक्शन क्लास। नाउ अभी क्या हुआ है, जब मैं दूसरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमने डाला, तो हमने डाला कि मॉडल डॉट फॉरेन की विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस क्लास इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स अगेन। पहले प्रोडक्ट डिपेंड था कलेक्शन में, अब कलेक्शन डिपेंड हो गया प्रोडक्ट में, तो सर्कुलर डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे। तो क्या करना है हमें यहाँ पे या तो हम या तो नेम दे सकते हैं, एक ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या तो एक प्लस साइन डाल दो। प्लस साइन डालने से क्या होगा कि Django को पता चल जाएगा कि रिवर्स रिलेशनशिप हमें क्रिएट नहीं करना है।